जय गुरुदेव। These talks of Gurudev, at one level, they seem to be very logical or technical. But when you are listening to them, when you are centered in a meditative space, you will feel there is something beyond the logic. It is not exactly logical. It is very deep. See, many times I imagine when I'm listening to Gurudev that what Gurudev must be exactly feeling about this, and now he's putting this in words which we can understand. बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें किसी को कुछ बताना है और हम कुछ समझते हैं उसके बारे में, बड़ा गूढ़ होता है, it is quite deep or mystical, and then we try to come up with some words to convey that. So it does not exactly convey, but it gives an idea. तो शब्द एग्जैक्टली कन्वे नहीं कर सकते, वही गुरुदेव बोल रहे हैं आज के टॉक की शुरुआत में ही, वेरी फ्यू कैन ट्रांसफर द एक्सपीरियंस टू अदर्स। तो गुरुदेव को जब सुनते हैं तो क्या होता है, द एक्सपीरियंस इज गेटिंग ट्रांसफर्ड। सो हाउ यू लिसन मैटर्स अ लॉट। इफ यू आर जस्ट लिसनिंग इट एज एन इंफॉर्मेशन, एज अ लॉजिकल टेक्स्ट, तो वो अनुभव नहीं होगा। समझना भी है, लेकिन उसको फील करना है, उस टॉक को फील करना है। नहीं तो फिर सी ये जस्ट लोअर सेल्फ, हायर सेल्फ, अनमैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट, दिस इज जस्ट लॉजिकल इंफॉर्मेशन फॉर द ब्रेन। बस इसको अगर फील नहीं करेंगे। So now Gurudev is giving those examples. See, in the nature, what happens? The leaves, in the autumn, पत्ते झड़ जाते हैं, वो धरती में मिल जाते हैं, फिर उसी मिट्टी से फिर समर में पेड़ में फिर से पत्ते आ जाते हैं, साइकिल कंटिन्यू होता है। तो ओके, एक लॉजिकल लेवल पे ये एक ऑब्जर्वेशन हमने कर दिया। ओके, लीव्स फॉल इन ऑटम, they go and become part of the mud, part of the soil, they become manure. The same manure is now getting into the sap of the tree, and again the leaves are coming. But then we need to just now let this sink in the mind. What is the meaning of this? It's a continuous recycling that is happening. In the whole creation is nothing but a continuous recycling process. There is no other. There is no new stuff. Nothing is new. Everything is recycled. If everything is recycled, means everything is you. तो ये जो फील होने लगता है ना, तो देन दैट समथिंग हैपेंस इनसाइड। ओह, और इसीलिए दिस चैप्टर इज आफ्टर द 6th चैप्टर। जितना मेडिटेशन में गहराई में जाएंगे, उतना ये जो अभी बता रहे हैं ज्ञान विज्ञान योग, ये महसूस होने लगेगा, ये अनुभव के स्तर पे होने लगेगा। नहीं तो फिर इट विल जस्ट बिकम अ लॉजिकल टेक्स्ट, लाइक अ मैथमेटिकल प्रूफ, some set of equations. Same thing like manifest and unmanifest. So manifest level पे सिर्फ अटकना नहीं है,
ये मैनिफेस्टेशन अनमैनिफेस्ट का ही स्वरूप है, जो दिखाई नहीं देता उसकी अभिव्यक्ति है ये दुनिया। ये संसार जो हमें दिखाई देता है, जो नजर आता है, ये सिर्फ एक अभिव्यक्ति, जस्ट एन एक्सप्रेशन। So the eightfold nature, Krishna says, eightfold nature. So there is Pancha Mahabhutas plus mind, intellect and ego. पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 और ये क्या है? ये सारा प्रकृति है, ये पुरुष नहीं। This is the manifest. And then Krishna says, but all this is being driven, is being held by my higher self. So the manifest and the unmanifest. So two-step process, Gurudev says. In another talk where Gurudev has given a talk on enlightenment, the same thing in different words. He said enlightenment is a two-step process. From somebody to nobody. And from nobody to everybody. मैं कुछ हूं से मैं कुछ नहीं हूं. ये पहली स्टेप है. तो मैं कुछ नहीं हूं मीन्स क्या? मैं ये शरीर नहीं हूं. मैं ये 5 एलिमेंट्स नहीं हूं जिससे ये शरीर बना है. मैं ये मन भी नहीं हूं. मैं ये बुद्धि भी नहीं हूं. मैं ये अहंकार भी नहीं हूं. So you are rejecting till only one thing remains, which is beyond these 8, which is the self. फिर जब self का अनुभव होने लगता है, उस अनुभव में गहराई में उतरने लगते हैं, और फिर जब ये पूरी तरह से अनुभव में आने लगता है कि यही हूं मैं, then you again switch. तो ये 8 भी मेरा ही भाग है, ये मेरी ही अभिव्यक्ति है. This is my manifestation. But first you have to alienate yourself from these 8, otherwise you will never reach the self. So जैसे गुरुदेव ने बोला, whenever the ego gets challenged, if anybody touches your ego, then what happens? All the negativity starts coming out. तो ऐसे क्षण पे क्या करना है? जब ऐसा होने लगता है, जब ये आपका ईगो, जब हमारा ईगो चैलेंज होता है, तब क्या करना है? तभी ये याद करना है, this is not me. This is just an outward manifestation. The real me is something else. So nobody has said anything wrong to me. Yeah, of course it's difficult. That is why we are sitting and understanding all this. And difficult को easy क्या करेगा? Homework. Difficult को easy बनाने के लिए ही homework है. नहीं तो फिर सुबह सुबह 10-15 मिनट टॉक सुन के टॉक नोटबुक में चला जाता है. वो सिर्फ दिमाग के सर पे नहीं, दिमाग से दिल में उतरना चाहिए. दिमाग से दिल में कैसे उतरेगा? That this 2-foot journey is a long journey. Some effort has to be taken for getting the talk from here to here. Gravity doesn't help to pull it down here. That experimentation has to be done. So when somebody challenges the ego, so this is our homework today.
When somebody challenges our ego, instead of retaliating egoistically, we become aware. Ego is not me. It is just a manifestation. The real me is something else. Now, the one hint is, ऐसे situations में immediately if you think, अगर गुरुदेव मेरी जगह पे होते तो गुरुदेव ने क्या किया होता? Or if this was happening to Krishna, how would Krishna have dealt with this? Immediately it allows us to connect to the higher self rather than the manifest part of our existence. When you put Gurudev there, or when you put the divine there, immediately it allows you to connect to your real self, the unmanifest. आज इसको करके देखना. आई एम श्योर आप लोगों ने करके देखा भी होगा. In the advanced course talks, Gurudev has mentioned this, na? Sutre Manigana. Pearls of creation. So the sutra is the ultimate consciousness, the supreme consciousness, the divine consciousness, that thread which is tying all these beads together. And all beads are tied in that one. अभी देखो, एक ये होता है ना, पिस्ता. There is a pista in the shell. वो shell है. So what do we do? If you want to eat the pista, what do? You break the shell, you open the shell. Correct? So now there is a pista in my hand, let's say. So you will say there is a pista in my hand. Now when I break the shell and open it, and I keep the shell aside, and I'm holding the nut which is inside. Now what is this? This is also pista. Right? But with the shell also it was pista. Now without the shell also it is pista. Now you have said this is the shell and this is the pista. The moment I separate the two, now you call this the pista and you call the shell the shell. But earlier when it was one, you called the whole thing as pista. Are you getting this? Unmanifest and manifest. जब शेल को हटा दिया तो एक्चुअली पता चला कि पिस्ता क्या है. जब शेल को हटा दिया तब पता चला कि एक्चुअली पिस्ता क्या है. लेकिन शेल के साथ वो पूरा पिस्ता ही है. This is the whole creation. Right? But when you remove the shell, which is earth, water, air, fire, space, mind, intellect, ego, when you remove these 8, so see, nowhere Krishna has said, or even Gurudev said, there is a 9th aspect, 8-fold, because that 9th is not different. The self, it is not different. Self का ही ये 8-fold manifestation है. It is not कि ये 8 है और फिर 9वां है. तो जब भी आपकी कोई ईगो को चैलेंज करता है तो आपको रियलाइज करना है ये तो मेरे शेल को गाली दे रहा है, मुझे थोड़ी. He's talking about the shell. I'm not the shell, I'm the pista inside. Isn't it? So the moment this realization comes, and this will need practice. First few times, so when your ego gets challenged, आपको याद ही नहीं आएगा, अरे वो पिस्ता कहाँ चला गया वो.
You just forgot about it totally. सारा तमाशा हो जाएगा. You will also give nice one or two from your side, and then you will realize, oh my God, I forgot. Yeah, this will happen a few times, but I'm telling you, because see, I've done these experiments, and I have noticed, yes, we fail a lot of times. But then when finally, even if 1% success comes, I feel, it creates such a wow. 1% भी सक्सेस मिलता है ना, थोड़ा सा भी रियलाइजेशन आ जाते है, एकदम, you feel so untouched. मजा आता है, फिर सामने वाले पे कंपैशन आता है एक्चुअली. बेचारा is struggling with my shell. Okay, so that's our homework for today. And yes, so that we can connect better and better to the pista inside, we need to do Sahaj Samadhi meditation. And we are having a reconnect today where we'll have the guided Sahaj Samadhi आज शाम को. बढ़िया. Okay, see you in the evening. Jai Gurudev.